Machephy Eduworld. Good afternoon, everyone. In the last class, we have discussed about conservative and non-conservative forces, and we have modified our work energy theorem to look like this: work done by conservative forces plus work done by non-conservative forces plus work done by external forces is equal to the change in kinetic energy, that is delta. And we have learned that work done by conservative forces can be written as minus of delta U. Work done by conservative forces is written as minus of delta U. So this is true for any type of conservative force. And if I write work done by conservative force is minus of delta U, then we can replace this equation by a new equation. That is work done by non-conservative force plus work done by external force. That is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. And then we have seen several cases in which energy can be conserved. Moving on, we'll do some more analysis on conservative forces. So things started from here, that work done by conservative forces, negative of change in potential energy. So potential energy is an energy that is due to arrangement of the system. When you change the arrangement of the system, you change the potential energy. Now see, from here, we can see here delta U is minus integration of F dot dr. That is the result that we are getting. So delta U equals to minus integration of F dot dr. When you want to integrate it from point 1 to point 2. It is a consequence of force being conservative. Conservative force का definition इतना ही है कि when you take a point from A to B, then you take it from B to A. किसी भी path से लेकर आए. That doesn't matter. The total work done is 0. In a loop, the total work done is 0. Achha, if you want to write it in differentiation form, we know that see F dot dr का जो if we integrate F with respect to dr, it is giving me the change in potential energy. So we can write that F is equal to du by dr. And there is a negative sign here, so there will be a negative sign here. So यहाँ से क्या पता चलता है कि if we draw a graph between force and r, if we draw a graph between force and r is just the position vector. The area under the graph, that will give me the change in potential energy. So r1 से r2 के लिए integrate करेंगे. What we'll get here is the change in potential energy. This area will give me the change in potential energy. And what do we get from this graph? कि अगर u और r का ग्राफ बना रहे हैं, then its slope will give me the force. It's the force potential energy. There's some potential energy which is like this, or like this. This is graph between potential energy and r. In that case, at any point, if you want to calculate this force, you need to find the slope. You need to find the slope to calculate the potential energy. At this point, suppose this is the slope. This is suppose the slope at this point. So this will be the value of force. If this angle is theta, then your force will be equal to tan theta. That will be equal to, of course, a rate of change of slope.
So if force is given as a function of r, or force is given as or potential energy is given as function of r, so you can get all the information that you can get it from mathematical analysis. So once you have written it in differentiation integral form for all the information that we can get from mathematical analysis, that can be done. Now r is a position vector, right? R is the position vector. So how to write it in component form? So integration के लिए it is simply like this. अगर suppose force के तीन component है, F vector is fx I cap plus fy j cap plus fz k cap, और हमारा dr वेक्टर लिख सकते हैं कैसे? dr is थोड़ा सा x में मोशन हुआ, थोड़ा सा y में मोशन हुआ, थोड़ा सा z में मोशन हुआ. Then your delta u, that is minus integration of f dot dr. f dot dr करेंगे तो i का i dot i, j dot j और k dot k ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, and this will simply result in minus of integration of fx dx plus fy dy plus fz dz. और इसको अलग अलग कर सकते हैं if you want to. बस x में किया हुआ जो वर्क है वो y से इंडिपेंडेंट है, y के मोशन से इंडिपेंडेंट है, और y का जो वर्क है ना दैट इज other components independent. fy dy negative of fz dz. That will be the total change in potential energy. That will be the total change in potential energy. Or how do we write the differential equation? इसको ऐसे लिख सकते हैं. If f is a force like this, I can write f vector. Differential form में ऐसे लिख सकते हैं इसको. ये वाला रिलेशन है f is equal to minus du by dr. इसको लिख सकते हैं f vector equals to minus of del u by del x I cap plus del u by del y j cap plus del u by del z k cap. ठीक है, ये del is different from d. del को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव मतलब उसमें हम टोटल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट फर्स्ट let me just note it down. So f is equal to del u by del x, del u by del y, del u by del z k cap. तो यहाँ सिर्फ r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, बट अगर x y z का फंक्शन हो तो we write it like this. So if you want to write the example, suppose our potential energy varies like this. It is both function of x and y. Suppose it varies like this: ax cube minus b y. है ना? तो इसका del u by del x अगर करना है, सी del u by del x अगर लिखना है तो सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट मान लेता है. del का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव. और d का मतलब होता है टोटल डेरिवेटिव. So del u by del x कैलकुलेट कर लेंगे, that will be just 3ax square. अच्छा, del u by del y कैलकुलेट करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे. तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि y and z are constant. Here we'll assume कि y and z are constant. del u by del y कैलकुलेट करेंगे तो माइनस b आ जाएगा, assuming x and z are constant. और del u by del z तो 0 ही है, assuming
x and y are constant. But see, but अगर ऐसा function हो, means अगर मुझे total derivative find out करना, and let us say use some function of x and y, तो du by dz कुछ अलग होगा. अगर du by dx कैलकुलेट करना है, what is du by dx? du by dx कैलकुलेट करने के लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा. नो, चेन रूल प्लस प्रोडक्ट रूल. तो du by dx के लिए मुझे पहले x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर आ जाएगा. फिर मुझे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर. थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx. तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव, इसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव. तो हमें टोटल डेरिवेटिव नहीं करना है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है. टोटल डेरिवेटिव में फिर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy by dx भी आ जाएगा. बट पार्शियल डेरिवेटिव में y और z को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट मान लेते हैं. तो इसको डेल भी बोलते हैं, कुछ लोग डेवा डेवा भी बोलते हैं इसको. But here it is ddx, here it is del x. That's what I will say in my classes. But लिखने का तरीका ऐसा ही, ये d लिखेंगे यहाँ पे, और ये थोड़ा d थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो उसको del बोलते हैं. del x, del of x मतलब पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव में अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, लाइक दिस. और टोटल डेरिवेटिव में अगर y वैरी कर रहा है तो x भी वैरी कर रहा होगा. दोनों एज्यूम करते हैं, दोनों का वेरिएशन एज्यूम करते हैं. Okay, let us do some questions. So let us say the force is given and it varies like this. Force is given. Let us say the potential energy is given. Potential energy varies like this: ax square minus, yeah, constantly 2x square minus 4x. So find force in this case. The solution will be just you have to find del u by del x, del u by del y, and del u by del z. यहाँ पे आई कैप लगाएंगे, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप. तो y और z का तो फंक्शन है ही नहीं, so we don't need to worry about that. So find the force here. In the second case also you have to find the force. Naman, tell me the value of force in the first case.
Someone, can you hear me? Yes, sir. हाँ, फर्स्ट केस में del u by del x कितना आएगा? इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? सर किसको? u को क्वेश्चन नंबर 1 में। हाँ 4x minus 4 4x आएगा। देन del u by del y कितना आएगा? y तो है ही नहीं, तो del u by del y 0 आ जाएगा एंड del u by del z भी 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। तो सिर्फ del u by del x बचेगा। आई कैन राइट -4x minus 1 I कैप। मींस जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में लग रहा है, y और z में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। निर्मित इस केस में del u by del x कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में? -6xy plus 7 I cap minus 3x square j cap। अच्छा, सीधे फोर्स ही बता दिया क्या? -6xy plus 7 ये पूरा j कैप, नो I कैप प्लस 3x स्क्वायर j कैप। हाँ गुड। तो del u by del x आ जाएगा 6xy minus 7 और del u by del y निकाल सकते हैं, that will give you 3x स्क्वायर। और इसमें तो y है ही नहीं, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो 7x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और del u by del z is 0, तो z पे डिपेंड नहीं कर रहा है। So this is partial derivative. Now we have some important terms regarding to potential energy. So we know that if force is zero, then particle is in equilibrium. So, अब हमारे पास केस आ गया है कि अगर फोर्स 0 है तो ऑफ कोर्स du by dr भी 0 होगा। ये सिर्फ वन डायमेंशन की बात करता है, 1D मोशन की बात करता है। ठीक है, अगर if f is 0, let us say x में ही मोशन हो रहा है, if f is 0 then du by dx should be 0. Of course f is minus du by dx, तो minus du by dx should be 0. तो अगर du by dx 0 हो गया then particle is in equilibrium. तो किसी जनरल फोर्स की बात करें तो कई तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं। So starting with an example, suppose you have a hill and valley top like this. So let us say कोई hill and valley arrangement है और हम अपना पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, ग्राउंड से mgh होता है, तो ग्राउंड को कहीं भी ले सकते हैं। लेट अस से ग्राउंड लेवल हमारा ये, डेटम लेवल यहाँ पे होगी। तो वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं। सो लेट अस से मतलब ये एक्चुअल ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड कर्वेचर है ऐसा, और हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का।
या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस वाई बोल सकते हैं, तो यू वर्सेस वाई है ना। पोटेंशियल एनर्जी वाई जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो सपोज यहाँ पे सपोज कुछ भी y की वैल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे mgy कम होगा, यहाँ पे mgy ज्यादा होगा, यहाँ पे mgy कम होगा, लाइक दैट वी कैन से। सो अगर ये नहीं भी होता तो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक हिल एंड वैली अरेंजमेंट। सो अगर किसी बॉल को अगर यहाँ पे रख रहे हैं, किसी पार्टिकल को या ब्लॉक को यहाँ पे रख रहे हैं, तो वी नो पॉइंट ए पे क्या होगा, du by dx 0 होगा। पॉइंट ए पे du by dx 0 होगा, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा। सो पॉइंट ए पे पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेम गोस फॉर पॉइंट बी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी, लेट अस से देयर इज पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे भी एक ऐसा, बी पॉइंट पे भी स्लोप 0 हो जा रहा है, तो पार्टिकल को एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे रख दिया तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। So there also du by dx, or if you want to call it y, that is also fine. फिर से हम हाइट को x में मेजर कर रहे हैं, so du by dx है। b पॉइंट पे भी du by dx 0 हो जाएगा। और कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं c पॉइंट, लेट अस से c पॉइंट इज समवेयर हियर, यहाँ पे बॉल को रख दें तो नेट फोर्स 0 ही होगा। तो c पॉइंट पे भी अवर du by dx is 0. So A, B and C, these are equilibrium points. और भी points हैं, यहाँ पे भी कह सकते हैं, D point, E point कहीं भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमारा du by dx 0 है, what is du by dx? du by dx is slope of this graph. du by dx is slope of this graph. U और x का ग्राफ है तो du by dx will be slope. तो A, B, C are points of equilibrium that we can write. A, B, C are points of equilibrium. Points of equilibrium. But see, A को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करते हैं, A को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आने का ट्राई करेंगे, बिकॉज एक फोर्स लग जाएगा mg sin थीटा नीचे के डायरेक्शन में, डाउन द हिल। सिमिलरली A को अगर थोड़ा लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो वो ये फिर से वापस अपने पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा। सो अगर A को डिस्प्लेस करने पे वो वापस अपने पोजीशन पे आने का ट्राई कर रहा है, then that is called stable equilibrium. That is called stable equilibrium. Stable equilibrium. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, अपना जो हाथी है वो उल्टा होना चाहिए। कैसे, द कर्वेचर हियर इज कॉनकेव अप या कॉन्वेक्स डाउन, और सिंपली हाथी उल्टा होना चाहिए। तो हाथी उल्टा होने के लिए अब अगर डबल डिफरेंशिएशन शुड बी पॉजिटिव, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए टी स्क्वायर यू बाई dx square, that should be positive. Or in simple manner, you can also write it is the elephant is upside down. That is also okay. Either you write du square u by dx square is positive, or you write the elephant is upside down. That happens in the case of stable equilibrium. Stable equilibrium, the particle will try to regain its position. Particle will try to regain the equilibrium position when displaced. That is the point of stable equilibrium. That is the point of a stable equilibrium. वही इस पॉइंट पे रखेंगे अगर,
और थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, पार्टिकल को इधर ले गया तो और दूर चला जा रहा है स्टेबल पॉइंट से, यहाँ पे भी रखेंगे तो और दूर चला जाएगा अपने स्टेबल पॉइंट से, अपने सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट से। सो बी को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में पूरा सिस्टम ही अनस्टेबल हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये हाथी सीधा बैठा होगा और यू नो द कर्वेचर इज कॉनकेव डाउन या कॉन्वेक्स अप। सो हाथी जब सीधा बैठा होगा, सो योर डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव and particle will move away from the equilibrium position. Particle will, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना है, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा डिस्प्लेस। Particle will try to regain its the equilibrium position when displaced a little, and here particle will move away from equilibrium position when displaced by small amount, when displaced a little. सो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वापस अपने पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव बिकॉज हाथी उल्टा बैठा हुआ है। यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा दैट इज लाइक अ अपसाइड डाउन एलिफेंट एंड दिस ग्राफ इज लाइक अ सिटिंग एलिफेंट, सो डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, दैट इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सी को अगर थोड़ा सा राइट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी इक्विलिब्रियम में। थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस कर दे तो भी इक्विलिब्रियम में। सो पॉइंट सी के लिए देयर इज नो चेंज। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो सिंगल डिफरेंशिएशन भी 0 है और डबल डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाए। ओके, सिंगल डिफरेंशिएशन भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी फोर्स भी वैरी ना करे, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट इज कॉल्ड, इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। And particle just stays at the point where it is displaced. So यहाँ पे पार्टिकल को फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा, फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा। सो पार्टिकल को फर्क नहीं पड़ता उसको किधर डिस्प्लेस किया जाए, इट विल जस्ट stay like that. So these are the types of equilibrium which are possible in mechanics: stable equilibrium, an unstable equilibrium, and a neutral equilibrium. Note this. और सी एक बार डेफिनेशन और कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस। डिफरेंशिएशन करना है, 0 आया, नेगेटिव आया, डबल डिफरेंशिएशन करना है, नेगेटिव आया, 0 आया, पॉजिटिव आया, दैट विल टेल यू किस तरह का इक्विलिब्रियम था। बिकॉज सारी तरह की ग्राफ बना पाना इन एग्जाम इट इज नॉट पॉसिबल, and with hands it is not possible. There are some very good tools on internet to draw the graphs if you want to visualize the graph कैसे बनता है, but still एग्जाम में ऐसे ग्राफ बना पाना बहुत मुश्किल काम है, so इसलिए हम मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प लेते हैं। हाँ, ग्राफ्स पे होल्ड जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छे से ग्राफ समझ में आता है, इक्वेशन देख के अगर ग्राफ बना सकते हैं, मैथ्स में भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा ग्राफ से रिलेटेड चीजें, उनको भी ध्यान देना है। So all those things will be helpful for physics. बट हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है, इनकी हेल्प से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम। ओके, नोट दिस डाउन।
Let's do some questions. So potential energy is given as a function of x, that is given by some constant divided by x minus bx. So find the points of equilibrium. Points of equilibrium is x की value जहाँ पे force 0 है. Find the points of equilibrium and the type of equilibrium at those points. And the type of equilibrium at those points. Type या फिर nature of equilibrium भी बोलते हैं. सॉल्व दिस. डिफरेंशिएट करना है. पहले कहाँ पे du by dx 0 हो रहा है. du by dx 0 में फोर्स 0 है. फोर्स 0 पता चल जाए, फिर इस पॉइंट पे d स्क्वायर u by dx स्क्वायर चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव. a और b की वैल्यू दे देते हैं तो कंपेयर करने में इजी होगा. लेट अस से कि b is equal to a by 2 है and a is a positive constant. a भी greater than 0 है, b भी greater than 0, both are positive. It is both are positive, we don't need to relate yet. A and b both are greater than 0. Question, am I audible to you? Yes. Yeah. So are there any equilibrium points for the first question? So the equilibrium will be stable. Equilibrium will be stable, and why is that? Because x is positive. X is positive. See, पहले तो differentiate करना है, force find out करना है. Force जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे उस x पे there is a possibility of different types of equilibrium. So first differentiation will be minus a by x square. तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस b का प्लस b हो जाएगा. इसको 0 करना है. So that will give you a by x square should be equal to minus b. From here x square, that is equal to, x is equal to root over minus a by b. Okay. But I said कि a and b both are positive. A and b are both are positive, so x is imaginary here. X is an imaginary number. So there are no points of equilibrium. There are no points of equilibrium. So suppose we want to put this in perspective and see how the graph will look like. Let me share a new page. So let's say I have a general function. जिसमें plot कर सकते हैं. Let us say u is defined here. U is equal to a divided by x square, a divided by x minus bx. A divided by x
minus bx. Then अगर a और b पॉजिटिव है ना, अगर a और b पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा है. तो यहाँ पे we can see there are no hill or valley points. a को बढ़ा भी देते हैं फिर. The graph is just shifting, but there are no hill and valley points. ठीक है. अगर सपोज किसी एक क्वांटिटी को नेगेटिव कर देते हैं, सपोज b को नेगेटिव कर देते हैं, b को नेगेटिव किया तो ये एक मिनिमा आ रहा है, दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये एक मैक्सिमा आ रहा है, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. अगर दोनों को नेगेटिव कर दे फिर से ग्राफ विल बी शिफ्टिंग इन अ वे सच दैट देयर आर नो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स. ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स. बट a को नेगेटिव b को पॉजिटिव कर दे फिर से, हियर यू आर गेटिंग द मिनिमा पॉइंट्स, दिस विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे जो पॉइंट आएगा और यहाँ पे मैक्सिमा वाला पॉइंट आएगा. बट अगर दोनों पॉजिटिव गिवन है, सो देयर विल बी नो maximum or minimum point. It will only happen when one of the them is positive and the other one is negative. Okay. अच्छा, सेकंड वाला भी प्लॉट कर लेते हैं. अब ये खोल लिया है तो so let us see, it is a upon x raised to 12 and b upon x raised to 6. और दोनों ही पॉजिटिव. इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. अच्छा, हमारा ये x क्या शो करता है? x दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस. तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन पे लिखते रहता है. सो सिर्फ राइट वाला ग्राफ ही देखेंगे अब यहाँ पे. सो यू कैन सी, जब दो एटम्स वापस से बहुत क्लोज हो जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है. दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर. बी को लेट अस से ठीक है. तो ऐसा ग्राफ आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पहले कम हो रही है नेगेटिव में, फिर बढ़ के जीरो हो रही है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मिनिमा मिल रहा है. एक मिनिमा मींस देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू फाइंड. थर्ड वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं. थर्ड वाला ग्राफ तो बहुत सिंपल है, इट इज जस्ट ax square minus bx. ऑफ कोर्स ये एक पैराबोला है, पैराबोला में एक मिनिमा पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. पर सपोज एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो क्यूबिक इक्वेशन का या तो एक रूट होता है तो तीन रूट होते हैं. तो एक अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक मिनिमा पॉइंट होता है, एक मैक्सिमा पॉइंट होता है. क्यूबिक इक्वेशन मतलब ग्राफ का जो स्लोप है दो बार चेंज होता है, लाइक दिस. किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए ट्रू है ये. जनरल इक्वेशन पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे c और c के लिए स्लाइड ऐड करते हैं. सो यू कैन सी क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमेशा कुछ भी a b c की वैल्यू कर दे, देयर विल बी अ मैक्सिमा एंड अ मिनिमा पॉइंट हमेशा. अनलेस ऑफ कोर्स a b c में से किसी को जीरो कर दिया, देन देयर विल बी इशू. ये ऐसा भी है तो कहीं ना कहीं इट विल बी सी. इसके बाद इस तरह का जो क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. दिस हैपेंस व्हेन b का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं. तब if b is sufficiently positive, the graph will curve in a way such that it gives you a stable equilibrium point and an unstable equilibrium point. This is stable, this is unstable.
ठीक है, जब ग्राफ बना ही रहे हैं तो और ग्राफ भी देख लेते हैं. लेट अस से हाउ क्विंटिक्स इक्वेशन लुक लाइक. पावर 4 है तो कैसे दिखेगा. So it is looking like a parabola, but अगर मैंने वैल्यूज चेंज की तो इस पैराबोला के फीचर्स चेंज होने लगेंगे फिर. So it can happen यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, या तो 0 या तो 1 होता है. वैसे क्विंटिक्स इक्वेशन या पावर 4 है तो इधर देयर कैन बी 2 रूट्स और 4 रूट्स लाइक दैट. क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट तो होता ही है. दैट इज ऑलवेज ट्रू. क्यूबिक इक्वेशन का हमेशा 1 रूट होता है एंड they may have 3 roots to maximum. यहाँ पे 4 रूट्स भी हो सकते हैं. तो 4 रूट्स में यह दो मिनिमम पॉइंट है. दो मिनिमम पॉइंट में 2 पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, डी को नेगेटिव कर दे तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, ठीक है. तो आई थिंक ये फाइंड आउट कर लिया होगा. भाभी, व्हाट इज द पॉइंट फॉर एक्स वेयर वी आर गेटिंग द इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम? So, a by b raised to 1 by 6 a by b raised to 1 by 6, that is the x point. इस पे डबल डिफरेंशिएशन भी चेक कर लिया? नहीं. अच्छा, सी, जब तक हम डबल डिफरेंशिएशन चेक नहीं करेंगे तब तक ग्राफ बिना ड्रॉ किए पता नहीं चलेगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है. पहला पॉइंट हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मिल जाएगा, बट कौन सा स्टेबल है, कौन सा इक्विलिब्रियम टाइप है, तो एक बार डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. So let us say first find du by dx. Tell me भाभी, du by dx कितना आ रहा है? Minus 12a upon x raised to 13 plus 6b upon x raised to 7. इसको सॉल्व करें तो x raised to 7 कॉमन ले सकते हैं. तो इसको 0 करना है अगर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए तो. So that will give me 2a by b, that is x raised to 6. That implies that x is equal to 2a by b raised to 1 by 6. हाँ सर, 2 लिखना भूल गई. 2a by b raised to 1 by 6. तो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. बट कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So let us find d square u by dx square. That will give me minus 12 into 13a divided by x raised to 14 minus का प्लस हो जाएगा, and this will be minus 7 into 6 b divided by x raised to 8. तो मुझे चेक करना है इस वैल्यू ऑफ x पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. सो ये मेथड तो लंबा हो जाएगा, बट वी कैन डू दिस. पुट करके देख सकते हैं, बट रूट्स में आ जाएगा. ठीक है, एक और मेथड लगा सकते हैं इसके लिए. सो पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं वैसे, दैट इज b by x raised to 6 कॉमन ले लिया सपोज, तो ये आ जाएगा a by b x raised to 6 minus 1. फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं.
So of course एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी because you know that there is only one point, so stable equilibrium कौन सा है वही बन आएगा. But here to confirm we can take 6 by x raised to 8 common. X raised to 8 को x raised to 6 into x square लिख सकते हैं. b भी कॉमन ले लेते हैं. 26 a सो ये क्वांटिटी जो भी है पॉजिटिव आएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाला चेक करना है. 26 a by b, x raised to 6 को लिख सकते हैं 2 a by b. So this will come out to be 13 minus 7, that is 6. ठीक है, ये x raised to 8 है, ये तो पॉजिटिव ही आना है, तो इसको चेक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. So this is coming as greater than 0. So double differentiation is greater than 0. That means elephant is upset. So of course in exam you don't need to prove this. एक ही point आ रहा है, वही point of equilibrium होगा. But suppose JEE advanced का question है, there they can give कि अच्छा fourth option can be like this कि there are no points of equilibrium. There are no points of stable equilibrium. So JEE means बहुत tricky नहीं बनाते, but JEE advanced can be very tricky. All the options are possible. None of these भी possible होते हैं. कुशागर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया. हाँ सर, मैंने आपको भेज दिया. अच्छा, हाँ करेक्ट है. सो डिफरेंशिएशन आ जाएगा du by dx, that will be 2ax minus b. ये कब 0 होगा? जब x की वैल्यू हो जाएगी b by 2a. बट उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डबल डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2a. तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम. मतलब दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. बाकी योर सॉल्यूशन इज करेक्ट. वेरी गुड. Okay, let's go on to next question. कभी-कभी एग्जाम में ग्राफ ही ड्रॉ कर दिया सपोज. Let us say potential energy versus x का ग्राफ है. Just like this. The graph is like this. Potential energy is in joules, let us say, or position is given in x. It is meters.
There are markings on this: 1 meter, 2 meter, 3, 4, 5, 6. Then this is your 8. So of course, find the points at which there is stable, find the position at which there is stable equilibrium, and find the point at which there is unstable equilibrium. Aditi, tell me the point जहाँ पे stable equilibrium है. So 1 minute. Naman, can you tell me what are the equilibrium points? कहाँ पे stable है, कहाँ पे unstable है? Naman? No, sir. See, क्या कंडीशन लिखी थी? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? डबल डिफरेंशिएशन शुड बी पॉजिटिव कि नेगेटिव? Sir, positive. पॉजिटिव. डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो मतलब हाथी कैसा बैठा है? सीधा बैठा है, उल्टा बैठा है? Sir, ulta. तो उल्टा वाला ये वाला केस हो गया ना इस पॉइंट पे. हाँ. तो ये वाला पॉइंट हो गया. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए x इज 4 मीटर. ठीक है. हाँ, sir. तो अनस्टेबल के लिए हाथी सीधा बैठा होना चाहिए. Unstable is हाँ 7 or 8. 8 टॉप मोस्ट पॉइंट होना चाहिए. डिफरेंशिएशन भी 0 होना चाहिए. तो टॉप मोस्ट मैक्सिमम पॉइंट हो गया तो मिनिमम पॉइंट होगा. सिर्फ 8 है. x इज इक्वल टू 8 मीटर. ठीक है. हाँ, sir. Okay, solve the next one. Vaishnavi, tell me the value of potential energy in question number 2. ax square by 2 minus bx square by 3. Ax squared by 2 minus bx cubed by 3. And if you have to find change in kinetic energy, you can use the conservation law. So, और कोई external force नहीं है तो we can just write delta u plus delta k is equal to 0. That means change in kinetic energy is negative of change in potential energy. That will be potential energy at 3 meter minus potential energy at 2 meter. So potential energy at 3 meter हो जाएगा. That will be 9a by 2 minus
9b, and negative sign, potential energy at 2, that will be 2a minus 8b by 3. And from here you can find the change in kinetic energy. So 5a by 2 minus 19a by 3. Nine 3 is 27, 27 into a. So minus 9. So minus this will be minus, and this will be plus. Yeah. 19b by 3. Here b की value given होता तो ये भी find out कर सकते थे. That is the change in kinetic energy. And for equilibrium points, force is already given. तो force को ही zero करना है. So minus ax plus bx square, that is a force in x direction. This should be equated as 0. तो दो रूट्स आ जाएंगे. One point is x is equal to 0. Another point is x is equal to a by b. These are points of equilibrium. These are points of equilibrium. Then to find the nature of equilibrium, मुझे du by dx find out करना है. If we take this question on the second page. So इन दोनों point पे 0 हो रहे हैं. So we find d square u by dx square. Okay, that is minus of df by dx. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस a का प्लस से हो जाएगा 2px का माइनस 2px हो जाएगा. So double differentiation at x is equal to 0, that is a. So a positive. And if we calculate the double differentiation at x is equal to a by b, so a by b यहाँ put कर देंगे. That will give you as minus a. So minus a is negative. So greater than 0, double differentiation negative है. Sorry, positive है. So element will be upside down. That means it is a stable equilibrium. And this will be an unstable equilibrium when x is equal to a by b. तो ये वाला stable है और ये वाला point unstable equilibrium show कर रहा है. Any questions about this? No, sir. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान रखना है इसका. फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ. भारवी, डिड यू सॉल्व दिस वन? ये हो गया कंप्लीट? नहीं सर. ओके, ठीक है, डू दिस वन. Try to take not take much time, take 3 or 4 minutes. Stable equilibrium, unstable equilibrium और neutral equilibrium find out करना है. But remember ये ux ग्राफ नहीं है, fx ग्राफ है. So फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा है तो पता ही चल जा रहा है, डायरेक्टली पता चल जा रहा है.